class. Today our topic is bioremediation. What does bioremediation mean? Bioremediation में आता है ये term remedy जैसा. So what is remedy? पता होगा ना, to heal something that heals, right? Remedy और bio का मतलब हो गया living. Whenever living organisms heal something, that process is called bioremediation. जब भी कोई living organism किसी चीज को heal करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे bioremediation. तो यहाँ पे क्या चीज heal हो रही है? Soil. ठीक है, इस प्रोसेस में soil heal हो रही है. Soil कैसे heal हो रही है? इसके जो pollutants हैं, whatever pollutants or contaminants are present in the soil, these are degraded. तो वो बेटर हो जाएगी, हील हो जाएगी. जब तुमको प्रॉब्लम हटा दोगे तो वो हीलिंग ही है, राइट? फर्स्ट टाइप ऑफ हीलिंग. कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दीज आर जस्ट माइक्रोब्स. बायोरेमिडिएशन में और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिकॉज कई लोग होते हैं बायो तो मतलब सारी चीजें, प्लांट्स भी होगा, एनिमल्स भी होगा, सब रेमेडी कर रहे हैं. नहीं, ओनली एंड ओनली द माइक्रोब्स आर द वंस दैट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस. फाइन, चलो एक बार डेफिनेशन देख ली जाए. Bioremediation is a process that relies on biological mechanisms. That relies on biological mechanisms to reduce concentration of pollutants from soil. Right? Now, how can it reduce? हम लोग ने क्या पढ़ा? It is a process that relies on biological mechanisms to reduce concentration of pollutants from soil. How can it reduce? Several ways. It can either degrade the pollution, it can detoxify somehow. अलग अलग बैक्टीरिया है, अलग अलग चीजें करेंगे, अलग अलग माइक्रोब्स है, नॉट जस्ट बैक्टीरिया, फंगस भी हो सकता है. लाइक डिग्रेड करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे. समटाइम्स दे विल मिनरलाइज आल्सो, मिनरलाइजेशन भी होगा, और दे कैन ट्रांसफॉर्म. सॉरी, छोटा छोटा आ रहा है, बट दे कैन ट्रांसफॉर्म एज वेल. चेंज कर सकते हैं उसको फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन मोर hazardous form to a less hazardous form, और मे बी नॉन hazardous form. राइट, ये हो गया हमारे बायोरेमिडिएशन. अब क्या क्या चीजें होती हैं? व्हाट आर द pollutants that we are talking about? What are the pollutants in soil? Answer: agrochemical waste. जितना भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है, ऑल द पेस्टिसाइड्स, ऑल द इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जितना भी है, ये सारा जब एक्सेस में हो जाएगा तो इट इज ऑल pollutant only. So these are the ones that accumulate in soil and harm the soil fertility. तो ये हो गए. फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, फ्लोरिनेटेड compounds, fluorinated compounds, dyes. Dyes का मतलब colors है, not dyes, right? Dyes. Then few of the heavy metals. कुछ heavy metals होते हैं जो soil में seep in कर जाते हैं. Now this is related to a industrial location. जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे ये ज्यादा होता है. Then comes your hydrocarbons, benzene होता है, इथाइलिन होते हैं, ये सब आ सकते हैं, सॉइल में सीप इन कर सकते हैं. Nuclear waste, wherever this is happening, nuclear waste, and most important is your sewage. Right? Sewage तो contaminate करता ही है. So these are the pollutants that are present, okay, in the soil.
अब शॉर्ट में देखें तो बायोरेमिडिएशन के टाइप्स देखते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द site of action. Two types based on the site of action. What is site of action? It means wherever it is acting. कहाँ पे वो कर रहा है, अपनी खुद की जगह में कर रहा है या कहीं और ले जा रहा है. तुमको स्कूलिंग कहाँ मिल, कोचिंग कहाँ करते हो तुम? घर पे ट्यूटर आके पढ़ा रहा है तुमको कि तुम्हें घर से निकलना ना पड़े, या फिर तुम एक कोचिंग सेंटर जाके पढ़ोगे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू साइट्स. तो क्या क्या होती है? इन सिटू एंड सॉरी, एक होती है इन सिटू एंड द अदर वन इज योर एक्स सिटू. सो इन सिटू इज जब घर पे आके ट्यूटर पढ़ा रहा है, सॉरी, जब सॉइल अपनी ही जगह पे है एंड यू आर एडिंग और मे बी समहाउ रेगुलेटिंग बेटर माइक्रोब्स. माइक्रोब्स की जगह वही है, वहां पे ही है, एंड यू जस्ट प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर देम समहाउ. तो उसमें कहीं सॉइल निकाल के ले नहीं जानी है, सॉइल वही है उसी जगह पे. इट्स लाइक घर पे काम होना, ऑन साइट, राइट. एक्स टू मतलब है एल्सवेयर. एल्सवेयर कहीं और ले जाके करना. एक जगह से तुम सॉइल निकाल रहे हो, उसको दूसरे कहीं ले जाके फिर उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको सही कर रहे हो. नाउ दैट इज योर एक्स सिटू. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, बट बिफोर दैट और क्या चीज होती है जो डिटरमिन करती है एक प्रोसेस चूज करना? व्हाट आर दोस पॉइंट्स? pollutant का नेचर, what sort of pollutant are present, pollutant का nature, degree and depth of pollution, degree and depth of pollution, type of location, type of environmental location. Why is this important? Environmental location क्या फर्क है? इससे ये फर्क पड़ेगा कहाँ पे कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट है. हर जगह के तो अपने अपने अलग अलग कंडीशन है, अगर लिविंग कंडीशन है तो वहाँ के माइक्रोब्स भी अलग अलग होंगे. सो नाउ दिस डिसाइड्स हमें कहाँ पे कौन से माइक्रोब्स लाने. Cost and environmental policies. This is also a very important point before we consider what bioremediation process that we need to take or apply in an area. हर जगह की अपनी अपनी policies होती हैं, right? So these are few of the selection criteria. etc. are selection criteria. Okay? चलो अब क्लासिफिकेशन थोड़ा बाय लार्ज देखते हैं. Classification. Bioremediation techniques. एक्स टू इन टू पता ही चल गया. इन टू एंड एक्स टू. ओके. अब इन टू के क्या क्या होते हैं? इन टू में आपका आएगा बायोवेंटिंग, next comes your biosparging, biostimulation, biostimulation,
Bioaugmentation. Bioaugmentation. Then comes your composting. Okay, these are your in situ मतलब on site bioremediation techniques. एक situ में क्या क्या आता है? एक situ में सबसे important है बायोरिएक्टर्स हो गया और लैंड फार्मिंग. This is the classification we all need to know. Bioventing, biospudging, biostimulation, bioaugmentation and composting are part of your in situ, whereas ex situ के types है bioreactors and land farming. Now let's look at these one by one. So let's start with the in situ ones. In situ techniques discuss करते पहले. Okay. First out of these is the first कौन सी है हमारे पास? It is bioventing. Fine. Venting का मतलब समझ सकते हैं आप लोग. Venting comes from ventilation कि जब कुछ बेटर जैसे सफोकेशन होने लग जाती है रूम में, जो कार्बन डाइऑक्साइड भरती जा रही है और वार्म एयर भरती जा रही है. नाउ इट नीड्स टू बी टेकन आउट ऑफ द रूम. ठीक है. एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, तो उससे एग्जॉस्ट फैन व्हाट डज इट डू? जितना भी अंदर रूम में स्मोक अगर है या फिर वार्म एयर है, इट विल टेक इट आउट एंड थ्रो इट आउट. फाइन. सो सिमिलरली यहाँ पर भी पंप्स होते हैं. पंप्स आर प्रेजेंट. ये पंप्स होते हैं, पंप्स आर प्रेजेंट, जो कि इसमें भी कई सारे पंप्स होते हैं जो कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजों को रिमूव करेंगे. Why is it needed? Because ये सॉइल की जो इंडिजिनस बैक्टीरिया है, जो लोकल बैक्टीरिया है, उनकी बेटर ग्रोथ प्रमोट करते हैं. और जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ज्यादा बेटर डिग्रेडेशन होगा. Hence bioventing. You degrade the pollutants using indigenous soil bacteria by providing them with better nourishment, aeration and removal of their toxins, by providing them with better living conditions. Simply. तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है? अब हर एक टेक्निक अप्लाई करने का एक जगह भी होती है. फाइन. इट इज अप्लाइड इन द unsaturated zone of soil. What is unsaturated zone of soil? सॉइल प्रोफाइल पड़ी होगी, ऐसी कई सारी लेयर्स होती है सॉइल में. ये नीचे आके वो पहले बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, फिर ऐसे 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 करके ये यहाँ पे सॉइल के बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं. एंड यहाँ पे पानी होता है, वाटर बेड. राइट. तो जितना जितना नीचे आते जाएंगे उतना उतना पानी बढ़ता जाएगा. हेंस ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज योर unsaturated area, unsaturated zone, whereas this is your saturated zone. जैसे पानी में शक्कर घोलते जाओ after some time it will not dissolve, right? It will be left over. Why? The water is saturated. All the spaces, all the cavities, air cavities in water are occupied by sugar molecules. Similarly here, all the cavities in soil, यहाँ पे तो soil की cavities है because उसका quantity से compare है, all the quantities are filled with water. The soil has no more air present in it. There is no porosity in this region. It is all saturated. Whereas in the above regions, उसमें थोड़ी थोड़ी air होती है, थोड़ी थोड़ी air cavities होते हैं, porous होती है soil. Fine. So this process is applied in the unsaturated zone of soil, मतलब ऊपर ऊपर के soil के हिस्सों में. What does it do? It enhances indigenous bacteria. Indigenous का एक और टर्म होता है, that is your
thinness out of thinness. ठीक है, अगर ये वर्ड कहीं पे दिखे तो it means indigenous bacteria or the local bacteria residing in that area. What does it do? A pump is installed. हाँ, I was talking about the pumps, no? So pump install किए जाते हैं to provide with in the unsaturated zone. Okay, saturated meaning. Pump is installed to provide air, oxygen, nutrients, proper moisture if needed, and an- another pump is another pump for removal of CO2 or waste products. Right? You are giving such friendly and cozy, comfortable environment to the microbes. Why will they not survive there? Why will they not grow there? So this does what? It enhances indigenous bacteria. So as many bacteria, they will act on the pollutants. Hence, this is for your bio venting. Where can it be applied? It can be applied for light spilled petroleum. Lightly spilled petroleum. So you see petroleum अगर spill हो गया तो air बंद हो जाएगा. So we need to provide the microbes with air and then they can do their own activity to degrade this. Petroleum कौन degrade करता है? It is degraded by pseudomonas species. Okay, so petroleum is degraded by pseudomonas. So you know where is this bioventing utilized? It is utilized where lightly spilled petroleum हो गया या ऐसा है कि वहाँ पे पंप वगैरह इंस्टॉल होंगे. तो this is how you identify that this is bioventing. Now, what are the points are associated with it? Since you are providing everything, you are giving it time, it is a very prolonged treatment. Prolonged treatment time. It is a very prolonged treatment. That means it is very time taking. Also, it is expensive because of the installation of pumps and everything. Okay, to choose a site to build the whole scenario where it can work on it. So this all adds to the cost. ये disadvantages आ गए, मतलब demerits. Merits क्या क्या है? Merits are कि soil structure is not harmed. Soil structure is unharmed. Soil structure here is unharmed. इसमें हम लोग एक्सकेवेट नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल के कहीं ले नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए बेटर है वो चीज. Soil structure is unharmed. Further moving on, we will talk about that. Next, bioremediation technique. Second technique that we have is biosparging. Alright, biosparging. It is done in the saturated zone.
सैचुरेटेड जोन, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर इंजेक्टेड, it is not pumped, it is injected, that is the key term here. Nutrients are injected, this is also an in situ method, and your indigenous bacteria are enhanced. These are enhanced, and it depends on, very major factor, it depends on soil permeability and pollutant बायोडिग्रेडेबिलिटी, कितना आराम से या कितना मुश्किल से जो पोल्यूटेंट है बायोडिग्रेडेबिलिटी कैसे डिग्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है आराम से। द डिफरेंस बिटवीन बायोस्पार्जिंग एंड बायोवेंटिंग इज, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट दिस इज इन दी सैचुरेटेड जोन, एंड ये जो होगा this acts in your saturated zone while this one acts in your unsaturated zone. दोनों में ही soil bacteria enhance हो रहे, दोनों में ही आप nutrient provide कर रहे हो, air provide कर रहे हो, सब कुछ है, but this is in your saturated zone. Biosparging is in your saturated zone. Moving further, we have biostimulation. Stimulate करना क्या होता है, to regulate something, somehow to induce some action into it. Biostimulation. So here what do we do is we provide electron acceptors like nitrogen, phosphorus, oxygen, carbon, along with some rate limiting nutrient. Now this is a very important point again. Rate limiting nutrient क्या होता है, such a nutrient out of all the essential nutrients जिसके ना होने से सबसे पहले प्रोसेस स्लो डाउन होगी, उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस. such an important nutrient, essential nutrient is called your rate limiting nutrient. So we provide the soil with such stuff and this will help the microbes to grow और react, उसको थोड़ा stimulation मिलेगा. We can add molasses here. Right? Fourth है bioaugmentation. Bioaugmentation is what? It is the recruitment. It is the recruitment or addition of. It is the recruitment or addition of standard microbes. Standard microbes. It is the standard microbes to the area of contamination. It is the area of contamination and breakdown of pollutants. ठीक है, not and for breakdown of pollutants. तो यहाँ पे हमने जो है कुछ ऐसे स्टैंडर्ड माइक्रोब्स लिए विच आर नोन कि यही पोल्यूटेंट डिग्रेड कर पाते हैं, इनके पास ये एबिलिटी है, हमें पता है ये चीज, तो हमने वो माइक्रोब को लिया. जैसे अब तुम किसी एरिया में हो, वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया, वहाँ पे तुम जाके सीडोमोनास डालोगे, कहीं पे हाइड्रोकार्बन ज्यादा है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग माइक्रोब्स ऐड करोगे,
sulfur degrading microbes ऐड करोगे which has sulfur compounds if the pollutant has sulfur compounds. तो इस टाइप से we know some standardized bacteria, some standardized microbes which we will put or provide with at the area of contamination. जहाँ पे वो contamination ज़्यादा है वहाँ पे उसको देंगे, then they will do their further activity. Next up we have is fifth, right? We have composting. Composting, I hope many people must be knowing. It is the degradation of organic matter. Degradation of organic matter in the soil. जब ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होगा तो ऑब्वियसली वहां की फर्टिलिटी बढ़ेगी. तो दिस इज टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी. टू एनहांस, yes, actually everything is to enhance soil fertility only, but yeah, this in particular. So what is done here? It is also a non-hazardous way. Non-hazardous manner of way. By manure is added. Manure हो गया, earthworm हो गए. These are added. फिर ये क्या करता है? सॉइल बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाता है. Helps in growth of soil bacteria. जितने ज्यादा बैक्टीरिया उतना बेटर degradation. Okay, these were the 5 composting points. I hope it is remembered because questions are in AceScape. We will solve the question part sometime. Okay, now we will start with our ex-situ techniques. ex-situ techniques में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्या क्या पढ़ना था हमें? One was a bioreactor, the other was land farming. Right? तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि ex-situ टेक्निक है. सेकेंड थिंग है फॉर वेरी कंटामिनेटेड वाटर ऑन सॉइल. दोनों के लिए यूज हो सकता है. फॉर कंटामिनेटेड वाटर as well as soil. वाटर कंटामिनेशन है, सॉइल कंटामिनेशन है, दोनों यूज हो जाता है. देयर आर बिग बिग बायोरिएक्टर टैंक्स. ऐसे बड़े बड़े से टैंक्स होते हैं. इसमें यू ऐड योर contaminated product, contaminated substrate, contaminated substrate. Then it is provided with oxygen, nutrients. It is provided with microbes, whatever healthy microbes we are talking about, they are added to this, and the waste product is taken out. Waste is taken out. So all these things इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे अंदर अंदर में, बहुत मिक्स चलेगा. तो जब ऐसा चलता रहता है क्या होगा? ऐसे स्टर होता रहता है. एक्चुअली ये स्टरर है एक हमारे पास, ये घूमता रहेगा गोल गोल. तो सॉइल जो है वो माइक्रोब्स में अच्छे से माइक्रोब जो है सॉइल में अच्छे से मिक्स होंगे, उसमें एक्ट कर पाएंगे, प्रॉपर एरिएशन होगा, प्रॉपर पॉइंट ऑफ एक्शन मिल पाएगा उनको, बेटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोरिएक्टर. ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं. फेड बैच होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर, फेड बैच, जस्ट बैच. तो बैच बायोरिएक्टर में एक बार में तुम डालोगे, उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराओगे, देन यू विल रिमूव इट ऑल, देन नेक्स्ट बैच फिर से स्टार्ट होगा. तो दिस इज बैच प्रोसेस. दिस इज वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज बार बार उसको ऑन करना, बंद करना, एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले. फेड बैच इज एक बार में तुमने सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए, सब माइक्रोब डाल दिया, सब सॉइल डाल दिया, कंटामिनेटेड सॉइल,
नाउ व्हाट यू कीप ऑन डूइंग इज, यहाँ पे बस न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट तुम्हें निकालने के लिए रुकना पड़ेगा बट इसमें न्यूट्रिएंट ऐड होता जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इज प्रीटी मच लाइक फेड बैच बट अ वेरी एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इट, प्रोलॉन्ग उसका प्रोसेस है कि यहाँ पे तुम नया न्यूट्रिएंट्स भी डाल रहे हो, नया सॉइल भी डाल रहे हो और वाटर व्हाटएवर इज कंटामिनेटेड, एंड फ्रॉम वन पॉइंट यू हैव एन आउटलेट। एक जगह से तुम्हारे पास एक आउटलेट है जो कि सारे प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव भी करता जा रहा है, सो यू नेवर हैव टू स्टॉप दैट प्रोसेस, इट ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग। Okay, one very important point for the ex-situ techniques are, in this the soil is excavated. Excavated means taken out, dug up, dig किया जाता है इसमें soil को, ठीक है, excavate करके it is put into other place. That is why it is an ex-situ procedure. यहाँ से हमने निकाली soil, उसको bioreactor में डाला, it is not in its original form, original place, and then we'll have to put it back after it is decontaminated or it is undergone bioremediation, right? So what happens in this is microbes, gases, microbes and gases, sorry, microbes, gases and nutrients are added, toxins are removed periodically, ठीक है। तो ये हो गया बायोरिएक्टर के बारे में। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखें, इट इज लेस, अच्छा चलो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बात करते हैं। दिस इज लेस लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब है इसमें कम काम लगेगा, एक बार डाल दिया हो गया। हाँ, एक्सकेवेशन वगैरह में टाइम लगता है बट रेमिडिएशन के, बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में नहीं लग रहा है, ठीक है। इट हैज इफेक्ट मेरिट्स, इट हैज इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, हम अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो भी जितनी भी कंडीशंस हैं। उसके बाद में सॉइल पोरोसिटी थोड़ी डिक्रीज होती है, सॉइल को निकालेंगे फिर उसको ट्रीट करेंगे फिर उसको वापस रखेंगे, तो जो सॉइल पोरोसिटी अगर आ गई, फालतू में खाली जगह आ गई है विच इज डिक्रीजिंग इट, तो उसको वी कैन कंट्रोल। डीमेरिट्स क्या क्या है, इट रिक्वायर्स वर्कफोर्स एंड कैपिटल, लोग आने चाहिए जिनको ये लोग होने चाहिए जिनको ये काम आता हो, इतना पैसा होना चाहिए कि कर सकें। वर्कफोर्स एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर large workspace is required, installation charges, तो these are all your demerits for this process। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। एक इसमें ये क्या है, एक और पॉइंट आता है कि ट्रीटमेंट टाइम इज शॉर्टेंड बिकॉज ये रेगुलेटेड प्रोसेस है, तो ट्रीटमेंट टाइम इज लेस। प्रिलिमिनरी जो स्टेज होती है वो काफी छोटी होती है इसकी। फिर नेक्स्ट मूविंग फर्दर, लास्ट हमारा क्या है, वी हैव लैंड फार्मिंग। सेकेंड क्या है हमारे पास, इट इज लैंड फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, सपोज कंटामिनेटेड सॉइल इज स्प्रेड ओवर, टेकन आउट इट, contaminated soil is excavated and
स्प्रेड ओवर, उसको ऐसे बिछा देते हैं, उसको ऐसे मतलब ऐसे, ये मान लो तुम्हारी पूरी सॉइल है, गड्ढा है खूब सारा, यू ले इट प्रॉपर्ली इन लेयर्स, ठीक है, ऐसे इसको स्प्रेड कर दो पूरे एरिया में, जितना एरिया है यहाँ पे, सपोज इट वाज दिस फील्ड एंड यहाँ पे यू हैव ऑल योर soil. This is how you spread it over, and then it is tilled periodically. इसका मतलब क्या हुआ, इसको बार बार आप लाइक मूव करते हो, इसको ऊपर, इसको नीचे, फिर इसको ऊपर, तो ऐसे ये जो है शिफ्ट होता रहता है, इट शिफ्ट्स इन पोजीशन, एंड दिस इज डन फॉर लाइक 10 to 35 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, ज्यादा नहीं, टॉप सॉइल की बात है। तो ये सब किया जाता है, दिस इज ऑल टू reduce reduce sorry this is reduce the contaminants, this is to provide um, better aeration, better conditions for the microbes to grow and act, so land farming, but it requires really large spaces, requires very large space, कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन इज हाई, फिर उसके बाद इसको ये हो जाएगा, फिर इसको वापस भी रखना पड़ेगा, नो ऑल दैट एड्स टू इट, दिस इज ऑल योर बायोरेमेडिएशन। सो क्या था प्रोसेस, जहाँ पे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू हम लोग रिड्यूस करेंगे सॉइल का पोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन, क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये सारे वेस्ट होते हैं अलग अलग, इन पे हमको एक्ट करना है, इनको चाहे तो डिग्रेड करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, मिनरलाइज करना है, ये ट्रांसफॉर्म करना है, वी विल डिसाइड। दो टाइप के होते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू इज ऑन साइट, द सॉइल डज नॉट नीड टू बी टेकन एनीवेयर एल्स, and ex situ the soil has to be taken kahin aur pe and then treated over there and again put back to the original place. Pollutant nature, depth and degree, sorry, okay, depth and degree पे ये जो है डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, इट आल्सो दीस आर द सिलेक्शन क्राइटेरियाज फॉर इट एंड डिग्री। कौन कौन सी होती है, बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायोस्टिमुलेशन, बायोऑगमेंटेशन एंड कंपोस्टिंग, दीज आर ऑल इन सिटू, एंड एक्स सिटू के अंदर आएगी बायोरेमेडिएशन एंड लैंड फार्मिंग। बायोवेंटिंग में इट इज इन द अनसैचुरेटेड जोन, nutrients, air and everything is provided, the toxins are removed, whereas in biosparging it is in the saturated zone, other processes are same। बायोस्टिमुलेशन में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर्स प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के साथ में क्या था, या रेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने थे, whereas in bioaugmentation standard microbes were added to the area। Composting and it meant degradation of organic matter, manure was added, earthworm were added, so like whichever helps in the growth of soil bacteria, वहीं के soil के bacteria, indigenous bacteria grow करेंगे, they will turn into something, they will help in the fast degradation of pollutants, they have this ability and they degrade the pollutants quickly। ex situ techniques में आएगा bioreactors and land farming। Finally एक topic है, this is not related to bioremediation but this is what phytoremediation, removal of contaminants by plants, this is what is your phytoremediation। ये तीन टाइप का होता है, ठीक है, one is phyto extraction, phytostabilization,
So what are these? Phyto extraction is also known as phytomining. Why? Because few of the heavy metals, यहाँ पे heavy metals आएगा, heavy metals are taken up by plants and hence removed by the soil. तो ऐसे हम लोग कुछ जो है बहुत ही heavy metals होते हैं उनको जो extract कर लेंगे through plants and that can be helpful in reducing the soil contamination there. Phytostabilization क्या होता है? Plants absorb, not absorb, but absorb certain pollutants to their roots and immobilize them. जो भी कंटामिनेंट है उसको इमोबिलाइज कर दिया, उसको चिपका लिया अपने रूट से, अब्सॉर्ब नहीं किया है, इट इज जस्ट प्रेजेंट ऑन दी surface of it, right? Absorb किया है यहाँ पे and it is to immobilize it, hence called phytostabilization. The contaminant or the pollutant is stabilized in one place, it is immobilized in one place. What is phytotransformation? It can be inside or it can be outside. When the substance is taken inside, it is absorbed and then it is changed into some other part, transformed into some other thing, then it is your inside. Outside में chemicals are released, chemicals हो गया, enzymes हो गया, whatever you may call it, chemicals are released to degrade or transform. Here, absorption. Right, this is all for bioremediation class. Bioremediation and phytoremediation में डिफरेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स phytoremediation के, phyto extraction, stabilization, phytotransformation, whereas what we read earlier was for your bioremediation, that means by remediation by bacteria. Any doubts? Let us know. Thank you.